इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आज अब से महज 3 घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। मोदी के इस इंटरनेशनल संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान की। यूएन के मंच से प्रधानमंत्री आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को क्लियर मैसेज देंगे। साथ ही चीन के विस्तारवादी एजेंडे पर भी करारा प्रहार कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा भी उठा सकते हैं। तो आपको बता दें अभी के अपडेट्स, जो बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, अब से महज कुछ घंटे बाद यानी कि 3:30 बज रहे हैं, तो 3 घंटे बाद यूएन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। मोदी के इस इंटरनेशनल संबोधन पर पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन से क्या संदेश देते हैं। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए यूएन के मंच से प्रधानमंत्री आतंक को पनाह देते रहने वाले पाकिस्तान को आज क्लियर मैसेज दे सकते हैं और साथ ही चीन के विस्तारवादी एजेंडे पर करारा प्रहार भी जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा भी जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि पहले भी यह मुद्दा उठाया गया और आज जब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मौका मिला उन्हें बोलने का, तो एक बार फिर स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर वो जरूर अपना पक्ष रखेंगे। वहीं पाकिस्तान ने यूएन के मंच से एक बार फिर कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन इमरान का यह झूठ चंद घंटे भी नहीं टिक पाया। इमरान के झूठ को भारत ने पॉइंट टू पॉइंट एक्सपोज कर दिया है। The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also essential to prevent another conflict between Pakistan and India. India's military build-up, development of advanced nuclear weapons, and acquisition of destabilizing conventional capabilities can erode mutual deterrence between the two countries. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. Our region, in fact, the entire world, has suffered because of their policies. Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. Mob lynching by cow vigilantes, frequent pogroms such as the one in New Delhi last year, discriminatory citizenship laws to purge India of Muslims, and a campaign to destroy mosques across India and obliterate its Muslim heritage and history are all part of this criminal enterprise. One more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor
to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. There's a huge humanitarian crisis looming ahead, and this will have serious repercussions, not just for the neighbors of Afghanistan, but it will have repercussions everywhere if a destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists. The reason why the US came to Afghanistan in the first place. So therefore, there is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. We marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. और अब इंतजार है आज शाम 6:30 बजे का, जब यूएन में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सामने भारत की बात सुनाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।